said, one of my friends, I shared your jaggery with her. She really liked it all nice. She wants to take it to New York, so she wants 4 packets of half kgs. She said, I'll let you know. I said, so tomorrow we are doing lunch, Ma'am, right? please unmute your mic. Ma'am, please So unmute your mic. she said that I've organized a jaggery. I said, just let me know so I can charge that. I'll pay you tomorrow and I will tell her how much it is for all but if Papi saying, no, no, it must be a good friend of yours. I will give you for you because you're traveling. I got so stuck with her. She refused. Then she's saying, we were not so well to do. And Laju, I will say, मेरे दुआ निकलती है लाजू के लिए. Suresh Ma'am, worked please with them. unmute your She said, mic. and then she's saying, Laju. हाँ जी मैम. नो मैम, हाँ डाउनलोड हो गया मैम. यस. वेट अ सेकंड मैम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम. आई विल इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट. अगर मैम मेरे को पता होता ना, आपने बोला ना कि पहले आपको पीपीटी चलानी है तो Hello.
Chehak ma'am, should we wait or if we can start? We are starting. We are just starting. Just 2 minutes waiting for participant to join all. Or Okay. ma'am, just starting in 1 minute. 1 minute, ma'am. Just starting in 1 minute. Sure. Good evening, everyone. First of all, I welcome to all the participants and Garima ma'am. Firstly, I will give a little introduction about Garima ma'am. Garima ma'am is a language teacher and a certified translator who specify in reading and storytelling telling in English and French language. She holds master degree in English language and a OLS degree and mass in English language and a BA certification from Alliance French and Science and an advanced diploma in French from S. Stephen College. And also she is an active preacher in ISKCON and the International Society of Krishna Consciousness, and she has been serving from last 18 years, helping people to deal with modern compliance of life by giving them a spiritual. Okay. So thank you so much, Chehak ma'am, for the introduction. I think there is some technical issue at her end, but no issues. I am very happy to be amongst all of you today. And we are here to discuss a very, very important and a crucial topic, which is around stress, which is around depression, which is around how we can deal with the complexities of our life, isn't it? So I think that is a little heavy topic for today. So before we start, I think let's give it a very light note. And there is a question on your screen. Chehak ma'am, I think आप थोड़ा आगे आ गए हैं. Can we go back? Back on the second slide where we had a question. Chehak ma'am, are you with us? Yes, ma'am. मैम हम काफी आगे आ गए हैं स्लाइड में, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे प्लीज. Yes. आगे नहीं मैम, पीछे पीछे. Okay, now you have ended the slide. Okay, no issues. Check ma'am, I'm sharing from my end. That's okay. So I hope the slides are visible to everybody. Yes, great. Oh, Yes, Mataji. great. Wonderful, wonderful. So before we start on a heavy note, you know, that how we deal with the complexities of life, let's have a small energizer, which would be that I want you to answer this question and reply in the chat box.
Okay, whatever you feel, whatever comes to your mind, the question is, what do you do on a busy day to relax yourself? So what do you do on a busy day to relax yourself? Your answers can go in the chat box. You have a minute to answer. Okay, I have my friend Diksha here. Diksha, if you can help me with the responses which are coming in the chat box. So you told me, Corbin? Yes, yes. Okay. So someone is telling, talk to my mother. Palak Gupta says, I will drink. I will honestly tell, oh, just mindlessly scroll my Instagram. I told sleep. Gunjan told black tea and sleep. Some Palak Gupta added that I will eat my food while watching it and I don't study. Ami Prajapati said that listen to Hanuman Chalisa. Nandini said play with the kid. Hitesh Kukreja said I always used to go to temple at the end of the day. Sakshi says I will hear lectures. And many more are coming. Rishita Rajput Singh says I will listen to music. Someone says black tea and sleep. I want to study. Someone says. Oh, wonderful responses. I think amid a lot of stressors, we have, for ourselves, we have created a lot of breathers, isn't it? Yes. So when there is a lot of stress throughout the day, we need some breathers, where we can actually relax ourselves and we can breathe. I'm sure you all would agree here. So great. I'm very happy to know that you all have some sort of, relaxation. You have some sort of means through which you can relax a bit after a busy day. Great. So from here, I would take up the session, which would be for an hour. And after the session, I would be answering and taking up your queries, just in case you have. And I think before we start anything, the best way to start something is to give it an auspicious start, isn't it? तो हम गाड़ी लेकर आते हैं नई और हम उसकी पूजा कराते हैं, isn't it? या हम कुछ भी नया काम करते हैं, हम नए घर में जाते हैं तो हम पूजा करते हैं. So why not, if we are understanding something which will benefit me at the end of the day, why not give it an auspicious start, isn't it? So I'll start the session for today with a prayer. Okay, so maybe you all can just close your eyes and listen to the prayer. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Okay, thank you so much, everybody. Now, a small request, if you all can go on mute. So we'll make this session very, very interactive. So how? By two means. First, because I can see a lot of people are there on my screen, isn't it? So two ways would really help us. First, we'll use the chat box. Okay, so if I have a question, your answers can go there. And second, if I'm asking something, maybe you can raise your hand virtually so that, I know that you are in agreement with whatever I'm saying. Okay, so thank you so much. And also, आज का जो session है, हम थोड़ा सा English, थोड़ा सा हिंदी में रखेंगे, because जैसे मेरी चेहक मैम से बात हुई, and she told me that, we have an audience पूरे India से, we have doctors, we have advocates, we have lawyers, we have students. So आज का session हम थोड़ा हिंदी में रखेंगे और थोड़ा इंग्लिश में रखेंगे, ठीक है? बट इफ देयर इज एनीवेयर एनी पॉइंट इन टाइम आपको कोई ऐसी चीज है, इफ यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. माय फ्रेंड दीक्षा विल हेल्प मी, टू टेक इट फॉरवर्ड. So okay, so I am sure that you all agree that modern day society is characterized by addiction to urgency,
Now, why I say addiction to urgency? हम सबको अर्जेंसी है किसी ना किसी चीज की, isn't it? हर चीज की अर्जेंसी है. डेटा टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, एक्सेल शीट्स टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे कैलेंडर नेक्स्ट वीक तक के टाइमली मार्क्ड होने चाहिए, isn't it? हर चीज की अर्जेंसी है. बट व्हाई एडिक्शन? एडिक्शन का मतलब तो ये होता है ना कि हमें आदत पड़ जाती है किसी चीज की. तो आप में से किस किस को अर्जेंसी की आदत है? Okay, I'll share a story with you. There was a man and he got a promotion. So he was living in Mumbai और उसका ट्रांसफर हुआ और वो पुणे चला गया. अभी आप सबको पता है मुंबई की लाइफ कैसी है ना? ट्रेन्स भरी हुई, बसेस भरी हुई. There is no night in Mumbai, isn't it? वहाँ का डे लाइफ और नाइट लाइफ एक समान है. और जो पुणे है is on a subtle note, isn't it? पुणे की जो लाइफ है वो still calm है. तो अभी this friend of mine, you know, he really got worried. ऐसा तो नहीं है ना that I'm not working hard enough just because life रुक गई है. तो अभी लोगों को फास्ट लाइफ की आदत हो गई है. हमारे सामने हमारा फेसबुक होता है, इंस्टा होता है और हमारी क्या आदत होती है ऐसे 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 स्क्रॉल करने की. अगर हमारे सामने हमारा टीवी होता है, very frequently we change channels, isn't it? Because that fastness is there in our mind now. Yes, तो हमें आदत हो गई है अर्जेंसी की. और ये जो आदत है अर्जेंसी की, ये क्या करती है, हमें हमारा जो माइंड है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है. तो जब आप लोगों ने आज के सेशन के लिए एनरोल करा, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द गूगल शीट्स यू हैव फिल्ड, द गूगल फॉर्म्स व्हिच यू फिल्ड. तो उसमें कुछ आंसर्स थे. देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू अटेंड टुडेज सेशन. तो बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज थे टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, एंड देन देयर वर मेनी responses around, you know, why everybody is stressed. So I just kept all of that in my mind, and I came up with this. So these days we have lot of interpersonal conflict. It can be, you know, this can be between boss and employee, employee and employee. This can be between parents and children, and most importantly between husband and wife, isn't it? Yes. So how many of you have this problem that there are some interpersonal conflict? Yes, you can raise your virtual hand. Deeksha, if you can help me, are people raising their hands? Ma'am, Riya Priya Gupta has Gupta raised the hand. has raised her hand. Okay. So we Like have somebody now, and now we have, in this busy schedule, in this busy day, you know, we become multitasker, isn't it? हमें सब कुछ एक टाइम पे करना है. Yes, we have during morning breakfast we have a sheet to complete, we have a data to compile, we have to mark our calendars. कितना कुछ रहता है एक ही टाइम पे. And you know, there is a study which says that multitasking is really taking a serious toll on productivity of, you know, on our productivity of the work and on our mental health. तो जब हम मल्टीटास्किंग हो जाते हैं और हमारा जो अटेंशन है वो इतना डाइवर्ट हो जाता है, that the productivity, that it, you know, it really takes a serious toll on that. Again, it is creating a lot of stress. Then comes unrealistic targets to meet. Have you faced unrealistic targets? Again, you can raise your hand. Are there unrealistic targets in life? Yes, Gunjan has raised her hand. Nandini, Sakshi. Yeah, yes. We have unrealistic targets to meet, and then we have unhealthy competition. Yes, there is so much of hatred when we enter a company. You know, there is a lot of politics, and then there is a lot of hatred. There is a cutthroat competition. People want to like run ahead. सबको पीछे छोड़ना है, isn't it? A very unhealthy competition is prevailing these days. And then we have long working days and job stress. How many of you agree with this? How many of you agree? Yes, Gunjan, Palak Gupta, Sakshi. Some write in the chat box, Palak Gupta, yes. So yes, we have a lot of stress which we are facing these days.
right? So let's understand the stress which we face is basically not outside, but actually it is inside us. Now, how to understand that the stress is not outside, but it is inside us? Why I'm saying this? Because nobody can cause you stress until and unless you want. अब इसको कैसे समझा जाए? कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहता, तो कोई भी कह सकता है तो एकदम गलत स्टेटमेंट है. आज की डेट में कौन स्ट्रेस होना चाहता है? एंड नाउ आई एम सेइंग, जब तक आप नहीं चाहते आपको कोई स्ट्रेस दे, तब तक आप स्ट्रेसफुल नहीं हो सकते. सो आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. तो एक स्टूडेंट था, फर्स्ट टाइम ही फेल्ड इन अ सब्जेक्ट. सो देयर आर लाइक 5 सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट गॉट फेल्ड. ठीक है, तो बहुत स्ट्रेस हो गया बच्चे को. पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स के साथ प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेस डेवलपमेंट प्लान पूरा क्रिएट करा. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बच्चा जो है स्ट्रेस में आ गया. अभी क्या हुआ, अभी मिड टर्म में बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया. फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट हुए, जब क्लास टेस्ट हुए तो फिर फेल हुआ. एंड देन थर्ड टाइम ही गॉट फेल्ड, एंड देन फोर्थ टाइम ही गॉट, व्हेन ही गॉट फेल्ड, तो अभी ही वाज नॉट स्ट्रेस्ड, rather he was happy कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में तो चलो पास हो गया. तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सेम चीज सेम टाइम पे सबको स्ट्रेस देगी, isn't it? तो हमारा जो स्ट्रेस करने का जो रिस्पॉन्स है, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, isn't it? So stress is an internal response to the external stimuli. I'm sure you all would agree to this. Yes. So कि हम एक चीज पे कैसे रिएक्ट करेंगे, हो सकता है हमारा जो कलीग है, हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो रिलेटिव है, उस सेम चीज पे उसका एक डिफरेंट रिस्पॉन्स हो. यस, सो टुडे वी आर हियर टू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग एन ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टू द टू ऑल द सिचुएशंस जो लोग हम पे फेंकते हैं, isn't it? So let's learn how to give an alternative response. Okay, now doctors, they say that stress is a real silent killer, isn't it? कोई stressful नहीं होना चाहता. But then the question still remains कि इतना hectic job है, इतना hectic, फिर घर पे इतना काम होता है, इतना competition है, and you have to deal with so many things. How to avoid stress? कैसे बिना stress के रह सकते हैं, isn't it? So let's learn this. Okay, so mind is guided by intelligence. Okay, mind कैसे काम करेगा, जो हमारी इंटेलिजेंस में है उसके द्वारा. एंड सेंसेस आर गाइडेड बाय माइंड. तो माइंड जो बोलेगा सेंसेस वो करेंगे. अब सेंसेस कब परेशान हो जाते हैं, when there is an external stimuli. Okay, अब इसको कैसे समझा जाए? फॉर एग्जाम्पल देयर इज, आप घर में आराम से बैठे हैं, ठीक है, संडे मॉर्निंग, यू आर हैप्पी, यू आर रिलैक्स, यू आर हैविंग योर टी विद न्यूज़पेपर इन हैंड, एंड एकदम से क्या होता है, दरवाजे के बाहर आपको एक आवाज सुनाई देती है, फट. अब क्या होता है, आप बहुत जोर से, अब सेंसेस, देयर वाज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सेंसेस ने सुना, ईयर वाज इन्वॉल्व्ड, यस, एंड okay, I would request everybody to go on mute. I think some disturbance is being created, so we can just go on mute. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, I would request Chehak ma'am to just ensure that everybody is on mute. Yes, if she can make me the co-host. Chehak, please make me the co-host. I will take Ma'am, care. please tell your name, ma'am, please. Diksha. Diksha, okay. Diksha Ahuja, na? Yes. Yes. Ma'am, all yours. I make you co-host. Please manage. Thank you so much. Thank you, everyone. Okay, so mind is guided by intelligence, senses are guided by mind, and senses कहाँ छिड़ जाते हैं, when there is an external stimuli. तो अभी क्या था, आप आराम से बैठे थे घर में और एकदम से एक पटाखा फूटा, बम, है ना. अब आप डर गए, ये कोई बम तो नहीं फूट गया, ये मेरी बिल्डिंग तो नहीं गिरने वाली है, अरे मेरी कार में तो नहीं कुछ हो गया.
है ना, तो एकदम से क्या होता है, माइंड एकदम एजिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंसेस ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। अभी क्या कहता है, सी दिस इज वेरी सटल, इजंट इट? तो माइंड इंटेलिजेंस से पूछता है, भाई ये क्या है? इंटेलिजेंस कहती है मुझे नहीं पता है क्या है, ऐसा मेरी प्रायर नॉलेज में कुछ नहीं है, ठीक है? तो दिस इज एन अननोन स्टिमुलाई। So when there is something unknown, a lot of stress is created. Yes, a lot of stress is created. हम एकदम से घबरा जाते हैं। But let's say आपको पता है वो जो साउंड है वो एक टायर पंचर होने की साउंड है। So अभी there is no stress, rather we enjoy that moment कि देखो पड़ोसी का टायर पंचर हो गया, गाड़ी जो है घसीट के लेके जानी है, isn't it? So again, I'll repeat, stress is an internal response to the external stimuli. तो वो response कैसा है, it all depends on the intelligence, कि intelligence कैसे काम कर रही है, okay? Now again, the example which I shared, when you hear a loud noise outside the window, तो ये example हो गया. One more example. For example, let's say you are in your office and you have a subordinate. ठीक है, आपके अंडर एक एम्प्लॉय है, अब आप निकले ऑफिस से, वो एम्प्लॉय भी निकला और उसने आपको गुड मॉर्निंग आज विश ही नहीं करा, अभी एकदम मामला गर्म हो गया, यू नो, वेरी एनरेज्ड, अरे ऐसे कैसे मुझे गुड मॉर्निंग नहीं विश करा, मैं बॉस हूँ यहाँ का, है ना? बट मे बी नाउ सी there can be, at times there can be reasons we are not able to understand the other person. Let's say your subordinate son has met with an accident and that very morning, and so he was very disturbed. अभी क्या है, क्योंकि उसके माइंड में वही चल रहा है, he has not even seen you walking around, है ना? तो अभी there is, अब अगर हम ये रीजन हमें पता हो तो फिर जो बॉस है वो जो है बुरा नहीं मानेगा उस चीज का, isn't it? Yes. So again, क्या एक्सटर्नल चीज है उसको पहले समझना हमारा ज्यादा जरूरी है. So let's do a small activity, okay, where you have to reply in the chat box based on your prior knowledge. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ लाइफ में, ठीक है, उस पे बेस्ड. तो वी विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ओके? सी अगर हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को तो हमें बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा. आई कैन सी फ्यू डॉक्टर्स हियर. तो अगर डॉक्टर के पास हम अपनी बीमारी को ठीक तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो जो मेडिसिन है वो accurate medicine नहीं मिल पाएगा, isn't it? So we have to be very honest here. So we'll have few questions. Chat box में आपको reply करना है R या OR. तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपने react करा या overreact करा, तो R या फिर OR, ठीक है? So we'll do this in the chat box. Okay. So my first question is, there was some rush. Okay, there was a situation where you had to rush, okay, and you're driving your car in rush hours. So will there be stress, or so will you react or you'll overreact? Your answers can go in the chat box. So R या आप लिख सकते हैं OR. Diksha, I would request you to help me here with the responses. Yes, so Palak Gupta says OR, Sakshi says OR, overreact, Rishi Rajput says react, Achutamani Devi Mataji says react, Chehak Chadha says no issues, Vasundhara Shah says react, Sandeep Pandey says react, R. Okay. Riya Gupta, I will not react. Hitesh Okay, Kukreja, great. react. He has Great, another okay. dimension. Great. I have next situation to throw. So you are getting a last minute work assignment. किस को मिला है सोचो और लिखो. Will you reacted or you overreacted? जब आपको last minute work assignment मिला to complete. OR, R, OR. So everybody has it's a 50-50. It's a 50-50. Great. Yeah. Okay. Now you are misplacing something in the house. अभी will you react or will you overreact? तो कई बार ये होता है ना, हम कुछ घर में ढूंढ रहे होते हैं और कोई आ जाए ऊपर से, क्या कर रहे हो, एकदम से अरे क्या है तुम्हें नहीं पता चल रहा, पता नहीं चीजें कहाँ रख देते हैं. So will you react or will you overreact? So here also 50-50. More are of R. Yes, 50-50. R, OR. 3 says
R 45 says OR. Okay. Okay, great. Next, you are dealing with an incompetence at work. So the boss is shouting at an employee and the employee is also frustrated. Both are at stress, isn't it? Yes. And I'm sure many people would say that the employee will react, but the employer will overreact, isn't it? So yeah, हमें पता है job का खतरा, right? Next, so being blamed for something. You have not done something wrong, but now you are being blamed for that. तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती की वजह से ये सब खराब हुआ. What will you do? You will react or overreact? So Ria says react, Palak Gupta overreact, Gunjan react, Kushi not NR, not react. Oh, sorry. Okay, she will not react only. She's a sadhu person. Princey Verma, OR. Anjali, OR. Rishita Rajput, R. Okay, great, great. Okay. So, anger is a natural emotional response to these perceived threats. Let's understand the type of threats which are there. So there are two types of threats. One is perceived threat and one is a real threat. Now what do you mean by perceived threat? Perceived threat वो threats होते हैं जहाँ हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, but कोई प्रॉब्लम है नहीं. Let's say आपने क्या किया, आप रात को बाहर गए और आप सड़क पे चल रहे थे और एकदम से आप कूद पड़े, अरे 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 सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया. क्योंकि वहां कोई लाइट नहीं थी तो आपको लगा कि एक सांप आ गया, और जैसे ही आप अपने मोबाइल के आपने लाइट जलाई, आपने देखा अरे ये तो रस्सी है. दैट इज अ परसीव्ड थ्रेट. ठीक है, देयर इज नो थ्रेट, पर हमें ऐसा लगा, हमने हमारी सेंसेस ने ऐसा परसीव किया, बट इट इज नॉट अ रियल थ्रेट. ओके, रियल थ्रेट इज व्हेन एक्चुअली इट इज देयर. ओके, so to avoid stress we need to change our inner response mechanism. Inner response mechanism, is it actually very easy to change that mechanism which we have built since we were like small kids? हमारे सबके दिमाग में एक एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है and accordingly we act or react, isn't it? तो हो सकता है एक सिचुएशन पे मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूं and my friend Deeksha would react on like some other way, है ना? So let's understand, when do we feel stressed? When do we feel stressed? So we feel stressed at these 5 situations. तो इसका एक्रोनिम बना रखा है CEOIF. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, if I was a CEO. ठीक है ना? So CEOIF. Okay. So first is when our control is not accepted. तो अभी कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करा, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसको कैसे समझा जा सकता है? आई एम श्योर आप सब जानते होंगे दैट देयर वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज को सब जानते हैं, है ना? तो उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग. रावण फॉर दैट मैटर वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग, बट व्हाट हैपेंड, जब उसका कंट्रोल नहीं बना सीता माता पे, जब हिरण्यकशिपु का कंट्रोल नहीं बना प्रहलाद महाराज पे, then there was a lot of stress. That stress led to a big fight, isn't it? So when our control is not accepted, then we face stress. Next, when our expectations are frustrated. Expectations, when we set unrealistic expectations. Sometimes it really happens, बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम अपने स्पाउस के साथ, हम अपने वर्कर्स के साथ ऐसा सेट कर लेते हैं which leads to stress. So we really need to check what am I expecting is fair or not. Then when our opinions are not accepted, ठीक है, तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया, so that we can have more opinions and whatever is coming out is less, isn't it? Then we feel stress when someone insults us. अभी ये तो पता है बहुत ही घातक होता है, कोई इंसल्ट कर दे, ऐसे कैसे, मुझे बोल कैसे दिया ऐसा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ?
है ना। तो मैं पता नहीं है मैं कौन हूँ, इतने करोड़ जो है हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे अनंत सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें अनंत प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स में से कुछ ही प्लैनेट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड है, एंड देन वी हैव अर्थ, एंड देन वी कैन अर्थ वी हैव, कितना बड़ा अर्थ है, उसमें एक छोटा सा हमारा कंट्री, कंट्री से पहले एशिया, देन हमारा छोटा सा कंट्री, उसमें कहीं एक छोटा सा सिटी है, उसमें एक छोटा सा जो है एक सेक्टर है, उस छोटा सा सेक्टर का एक छोटा सा घर है, उसमें कहीं मैं रहता हूँ, बट देन आई nobody should hurt the ego. So I'll share a very interesting story with you all. तो एक बार क्या हुआ, बुद्धा जो थे वो अपने फॉलोअर्स को लेके एक जगह पहुंचे। तो अभी वो जो जहाँ गए, वो जो व्यक्ति था उस घर में, वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रखता था, एंड ही इंसल्टेड बुद्धा, इंसल्टेड, यू नो, सेइंग दैट व्हाटएवर यू आर टीचिंग इज यू नो वर्थ नथिंग, बहुत इंसल्ट किया उसने। तो जो फॉलोअर्स थे वो बहुत हैरान हो गए कि अरे भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना, ये स्वयं बुद्ध आपके पास आए हैं। तो वो जो बुद्धा होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है, लेट्स लिसन, इफ देयर इज समथिंग टू इम्प्रोवाइज, व्हाटएवर ही इज सेइंग, लेट्स इम्प्रोवाइज, तो यू नो इन इवेंचुअली वी विल बी अ बेटर ह्यूमन। पर अगर उसकी बात में कोई दम ही नहीं है, देन वी लीव इट, ठीक है। तो अभी वो बहुत सुनाता है व्यक्ति, और अंत में क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो रोने लग जाता है। अभी वो रोते रोते बुद्धा से पूछता है कि अरे मैं तो आपको रुलाना चाहता था विद माय कनिंग वर्ड्स, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा सोचो कि मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, अभी मैं वो गिफ्ट ही नहीं एक्सेप्ट करूं तो वो गिफ्ट कहाँ जाएगा। कहते वो मेरे पास जाएगा। कहते बस सेम, आपने मुझे इंसल्ट दी, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो वो कहाँ गई, आपके पास गई, इजंट इट। वन मोर एग्जाम्पल, एक बार क्या होता है, महात्मा गांधी जो होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं शिप में। तो कुछ ब्रिटिश फॉलोअर्स होते हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता महात्मा गांधी को देखकर, तो वेरी एनवियस ऑफ महात्मा गांधी। तो व्हाट ही डिड, ही मेड अ स्केच ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यूज्ड टू वेयर धोती ओनली, ठीक है ना, और ऊपर एक पतला चादर, तो और विद स्पेक्स। तो एक बहुत ही फनी सा जो है एक पिक्चर उन्होंने बनाया और उनका, और उस पर पिन लगा के महात्मा गांधी को दे दिया, दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड टेक इट, ठीक है ना। और वो व्यक्ति हंसता हुआ, मॉक करता हुआ, ही जस्ट गोज अवे। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, बैठते हैं और आराम से बैठे होते हैं। अभी वो जो व्यक्ति है वो सोच रहा होता है महात्मा गांधी इज नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड, ऐसा कैसे हो गया, है ना, आई क्रिएटेड सच अ फनी पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड। तो आता है महात्मा गांधी के पास, वो कहता है कि अरे वो पिक्चर कहाँ गया। कहते हैं कि आपने कहा था जो इम्पोर्टेंट है वो रख लो, तो मैंने उसमें से पेन निकाल के अपनी जेब में रख लिया, वो पेन मुझे इम्पोर्टेंट लगा पर वो पेज मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। नाउ दैट पर्सन, दैट ब्रिटिश फॉलोअर वाज वेरी स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेस। तो सीखने की बात क्या है कि जो हमें नहीं लेना है ना, तो वी शुड नॉट टेक इट। Yes, be it tangible, be it intangible. Yes, so we have to change our response mechanism. Next, when we feel frustrated due to inability, isn't it? So, कभी-कभी क्या लगता है हमें, I am not able to give my best. मैं अपना पूरा नहीं दे पा रहा, isn't it? But we should understand, even Krishna is saying in Bhagavad Gita that you should do your best, not do the best, isn't it? Again, we can understand this with the help of a very interesting story. आप सबने रामायण पढ़ी है, तो रामायण में क्या होता है, एक छोटी सी गिलहरी होती है, isn't it? और वो क्या करती है, अभी बड़े बड़े जो वानर हैं वो चट्टाने उठा रहे हैं, उससे राम लिखते हैं और वो सेतु बना रहे हैं उसको पानी में डाल के, और वो चट्टाने तैर रही हैं, ठीक है ना। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, isn't it? बेस्ट कर रहे हैं अपना, भगवान राम को सीता माता से मिलवाने के लिए। पर वहां क्या होता है, वो जो स्क्विरल होती है वो भी राम भक्त होती है, तो जो स्क्विरल होती है वो छोटे छोटे पेबल्स उठाती है, कितना उठा पाएगी एक स्क्विरल, छोटी सी स्क्विरल वो उठाती है, और वो गिलहरी उसमें उस सेतु को बनाने में हेल्प करती है। अब जो वानर सेना होती है वो कहती है ए स्क्विरल मुंह, चटनी बन जाएगी तुम्हारी किसी के पैर के नीचे आ गए तो, isn't it? और वो जो स्क्विरल होती है वो लगी रहती है, और फिर भगवान राम उसको उठाते हैं एंड उसको बहुत प्रेज करते हैं, फाइनली she goes back to Godhead. Why? Because she did her best. She didn't do the best.
आप सब जटायु के बारे में जानते हैं, अगेन अ स्टोरी फ्रॉम रामायण। तो क्या होता है, जब सीता माता का अपहरण होता है और जब रावण उनको लेके जा रहा होता है, तो वो जो मुहूर्त होता है, दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस मुहूर्त, बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त होता है वो। उस समय अगर कोई काम करा जाए तो उस काम में विजय प्राप्त होगी। और ये जटायु को पता होता है, ये भी पता होता है कि अगर वो रावण से फाइट करेगा वो जीत नहीं सकता, ठीक है। पर वो फिर भी क्या करता है, वो वहां जाता है, उसके उसके पंख कट जाते हैं, फाइनली वो मर जाता है। बट वो जो फाइट होती है, दैट फाइट इटसेल्फ डिलेड दैट मुहूर्त, और जो ऑस्पिशियस मुहूर्त था वो इनऑस्पिशियस मुहूर्त हो जाता, ठीक है ना। तो नाउ ही वाज नॉट एबल टू डू द बेस्ट। बेस्ट क्या होता कि सीता माता को लेके ही ना जाने देते, बट ही डिड हिज बेस्ट, his best by doing what he could do to serve the Lord, isn't it? So even in life, see, ये जो universe है, it is no less than a university, isn't it? तो यूनिवर्सिटी में कितने एग्जाम्स होते हैं, वैसे ही लाइफ में बहुत एग्जाम्स होते हैं, बहुत एग्जाम्स आते हैं, हर दिन एक एग्जाम होता है, isn't it? Now it is on us how we take those responses, isn't it? How we change our inner mechanism to deal with the situation. Again, we have to change the script जो हमने अपने दिमाग में इतने सालों की जो एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, हमें उसको बदलना है, ठीक है ना। अपने दिमाग को जो एक फिक्स्ड माइंडसेट में अटका हुआ है, उसको उठा के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना, ठीक है ना। Now, how do we do this? How do we do this? How to, you know, have a good mindset? By following a very simple GIGO principle. See, अगर किसी चीज के अंदर कचरा डालोगे तो जब उसमें से निकालोगे तो फूल नहीं निकलेंगे, कचरा ही निकलेगा, isn't it? So what is in will come out. If there is garbage in, garbage will come out. If there is positivity in, positivity will come out. If there is negativity in, negativity will come out. तो जो डालेंगे वही निकलेगा, ठीक है ना। पूरा दिन वी आर सराउंडेड विद पीपल हु आर वेरी नेगेटिव, gossiping about each other, engaged in politics, that is it. So all kind of negative people we have, but then at the end of the day we, you know what we expect, अरे मैं इतना स्ट्रेस क्यों हूँ, इतना मूड स्विंग्स मेरा क्यों होता है ना। बिकॉज वट एवर वी आर फीडिंग हमारे इंटेलिजेंस में जो जाएगा वही जो है बाहर रिफ्लेक्ट होगा। So we have to be very mindful what type of thought we are, you know, feeding. Is it a positive thought? Is it about hope? Is it about mercy? Is it about peace? Or is it about racism? Is it about egoism? Is it about revenge? Is it about criticism? Is it about jealousy? Is it a necessary thought that I have to work, I have to focus on my career, I have to have a good routine? Or is it a waste? Am I just thinking about my past and future? What is it? So we have to be really, really mindful here कि मैं कैसा जो है चीज अंदर डाल रहा हूँ। आप सबने चैरियट देखा होगा, है ना। हम देखते हैं शादियों में भी जो दूल्हा होता है चैरियट पर आता है। अभी जो चैरियट है वो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो कहीं पे भी घोड़े जो हैं भाग रहे हैं, पर घोड़ों की प्रवृत्ति तो है, वो भाग सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है कि घोड़े उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस डायरेक्शन में चैरियट ड्राइवर चाहता है? ऐसी क्या चीज है जो उसके हाथ में है? योर रिस्पॉन्सेस कैन गो इन द चैट। So we are waiting for the responses. Yes, Ria. Senses. Ria. Ria, would you like to say? Unmute yourself. Yeah, actually, I didn't understand what you are asking. Can you just repeat? Sure. तो ऐसी क्या चीज है जो घोड़ों को डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाने दे? जिस डायरेक्शन में ड्राइवर चाहता है घोड़े उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है उसके हाथ में? सोचो,
Khushi Atrish says lagam. Rope control the chariot. यस, Yes. थैंक यू। आप सब देख सकते हैं ड्राइवर So, के हाथ में एक लगाम है ना। अभी जो लगाम है उससे जो घोड़े हैं, जो एजिटेटेड घोड़े हैं, वो उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस डायरेक्शन में ड्राइवर चाहता है, ना कि जिस डायरेक्शन में हॉर्सेस खुद चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हमारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हम सबके पास 5 सेंसेस हैं, तो वो 5 जो सेंसेस हैं आप उन्हें घोड़े समझिए इस चैरियट के। जो लगाम है दैट इज माइंड, जो इंटेलिजेंस है दैट इज द ड्राइवर, इजंट इट। और इस चैरियट पे बैठा कौन है? हम खुद, ठीक है ना। दिस इज द चैरियट ऑफ द बॉडी। अगर हमारा माइंड सही नहीं रहेगा तो जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो घोड़े हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, isn't it? And they have the power of spoiling our entire life. Yes. Okay. So let's understand the nature of mind. अभी देखो, अगर कोई लड़ने जाता है, युद्ध पे जाता है, तो किससे लड़ेंगे? दुश्मन से लड़ेंगे। दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन हमारा कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। किस तरह का दुश्मन है हमारा, किस तरह के औजार यूज करता है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर माइंड? द नेचर ऑफ आवर माइंड इज, अगर तो वो कंट्रोल्ड है देन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है तो वो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी है, isn't it? So can mind be our friend? Can mind be our friend? माइंड को कंपेयर कर सकते हैं हम एक चाकू से। तो क्या, अब अगर कोई सोचे चाकू बुरा है या अच्छा है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर तो वो एक सर्जन के हाथ में है तो वो जिंदगी भी बचा सकता है, पर अगर वो किसी टेररिस्ट के हाथ में है तो वो किसी की जान भी ले सकता है, isn't it? So it all depends on our mind कि हम उसे कहाँ जो है अप्लाई करते हैं। We have an uncontrolled mind, क्या क्या कर सकता है? We can have lack of confidence, we can have madness, we can have weakened determination, we can have a lot of stress, we will suffer from depression. Why all of this is happening? Because disturbed senses hain, through which we have a very fickle mind, very fickle mind. Yes, and then we have lusty intelligence. Now nothing is in place, and that is why, so coming back to the first thing from which I started the session, कि आप लोगों के जो responses थे, and I collected all of them and I just gathered them here in front of you so that even you can realize that what uncontrolled mind is doing to us. And then what is the result of uncontrolled? We see in recent times we have, हम सबको पता है कि हमने न्यूज में सुना कि फिल्म स्टार्स थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे अपनी लाइफ से, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, they said we quit and they committed suicide, isn't it? अभी उनके पास सब कुछ था, सब कुछ तो था, they had everything, they had all the luxuries of life, they had everything in life, they had fame, they had money, they had everything, पर एक चीज जो which was not at place was the mind. The mind was absolutely uncontrolled, because of which what happens, हम लोग क्या होता है, depressed होते हैं, and then the mind says, अरे depressed हो ना, just do one thing, go and drink, go and drink, go and smoke, this will reduce the your stress. बट क्या होता है, हम हाई तो हो जाते हैं, बट द मोमेंट वी गो हाई, बहुत बहुत जोर से हमें दोबारा जमीन पे पटका जाता है, दैट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. यस, वी कैन नॉट एस्केप इट. नाउ so I would like to discuss few tips with all of you, how we can reduce the stress, the ongoing stress we have, and so many stresses are there around us. So first is
to have realistic expectations, to have some realistic expectations. Yes, be it our colleague, be it our husband, be it our wife, be it our children, we should be very mindful when we are setting the expectations. Then to set the right definition for success for ourselves, isn't it? So बंदर का success swimming करने में नहीं है, पेड़ चढ़ने में है, isn't it? Each one of us is gifted with a different skill, Look for it and redefine the definition for success for yourself. Then it's comparison. हम लोग कहते हैं अरे उसके पास ज्यादा बड़ी कार है और मेरे पास तो भी छोटी कार है, फिर कार भी बड़ी हो जाती है, फिर लगता है अरे उसके पास तो इससे और बड़ी कार है, अब मैं इससे और बड़ी कार हो जा रही है, उसने तो एरोप्लेन ले लिया. This is an unending race, isn't it? So we should stop comparing ourselves. Next is to have an attitude of gratitude towards everything, isn't it? So अगर हमारा, if we have, all of us are blessed with so many blessings in life, so we should acknowledge them. Yes, that, oh Lord, give me the courage to change the things which can and ought to be changed, isn't it? With all the good fortune which you have given me. Then we have people's comment. ये सबसे मजेदार होता है, कोई बोल दे आपकी नाक अच्छी नहीं है, and then that person goes and do the nose job done, है ना? और अभी क्या होगा कि वो nose change करा ली या lips change करा लिए, कुछ uplift करा लिया, ठीक है, injections से करा लिया, but ultimately कभी कभी क्या होता है, वो result zero आ जाता है, isn't it? So we should not be bothered about people's comment. Then we should empathize with others' nature. तो दूसरे व्यक्ति का, I'm sure आप सबके friends हैं, ठीक है ना? अब let's say आपका कोई friend है, तो आपको पता होगा कि वो एक problematic situation में कैसे react करे, ठीक है? तो आप कहते हो अरे परेशान है इसलिए ऐसे बोल रहा है, इसके मन में कुछ नहीं, isn't it? पर वही व्यक्ति अगर किसी और को जाके वो बोलेगा तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया. So you should understand others' nature as well, So this quality of empathizing with others is really important. Yes. So using these tips and tricks, let's try to kick out the stress which we have in our life, which is leading to depression, which is leading to, a very unhealthy lifestyle which we are leading. Yes. One last tip, and I should say last but not the least, a very important theory I would like to discuss with everyone, which is the power of sound. Now, how it is related with stress, we'll understand. So, what is the power of stress? The power of sound. So, आप सबको पता है कि अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे पिच हो तो एक जो ऑर्डिनरी ड्रिंकिंग ग्लास होगा वो टूट जाएगा, isn't it? अगर बहुत ज्यादा साउंड आएगी तो कोई भी ग्लास होगा, कुछ भी चीज होती है वो टूट जाती है. दिस इज द पावर ऑफ साउंड. इसको टेस्ट करने के लिए एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, वो एक वाटर बॉडी के अराउंड गए, ठीक है, और दिस इज अ पिक्चर टेकन फ्रॉम अ डैम, और उन्होंने वो पानी को जो है चेक किया, तो उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरह अरेंज थे. आप देख सकते हैं, कैन टेक a minute and see how the molecules of the water was arranged, ठीक है ना? अभी उस जापानीज साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स बोलनी शुरू करी, बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स बोलनी शुरू करी. तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दोबारा से वो जो है टेस्ट करा गया, and they could see the molecules of the water were beautifully arranged, very beautifully arranged. तो अभी ये जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, मिस्टर इमोटो, he came to a conclusion. So this is a book, you can even check it, The Hidden Message in Water. So what did he conclude? He said that 70% of the body is made up of water, है ना? Yes, grade 5 NCERT science सबने पढ़ा है. Body is made up of 70% water.
Abhi, what he's saying is, let's fill this water of the body with negative energy by chanting abuses all the day. और क्या होगा? Our body is full of ugly shaped molecules. But if we chant the holy name, okay, of the Lord, if we are going on the spiritual path, तो जो हमारे mind है, जो हमारी पूरी body है, the molecules will be beautifully arranged, isn't it? ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, तो somebody said reading हनुमान चालीसा, chanting mantras. So I'm sure you must have experienced. You go to a mosque, you go to a church, you go to a gurdwara, you go to a temple, you feel peace. You feel peace. Why? Why do you feel peace? There are so many people around who are chanting the holy name, and then you have you have a very organized setup there. Everybody is there with a good intention, and that is why जब हम जाते हैं ना, हमारी stressful mind को भी थोड़ा टाइम मिलता है de-stress होने के लिए, isn't it? So taking this message ahead, we have to elevate our consciousness through mantra meditation. Now, what is mantra? अभी mantra क्या होता है? Mantra means, so man plus tra. Let's understand. Man is mind. ठीक है ना? And that is why we are here today, all of you, to tame the mind, the uncontrolled senses, isn't it? if अगर mind tame हो गया, तो जो senses है वो automatically लगाम में आ जाएगा. So, and tra means to wave or projection. Now, singing mantra is very relaxing and can soothe your nerves by concentrating towards the beauty and the sweetness of Krishna's name, the holy name of the Lord. When we do that, when we chant mantras, हमारा जो disturbed mind है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है. And this is what we all want. Yes. Now say good, a good will happen to you. If we do prayers, then the prayers will have good vibrations on us. So here I would like to share my personal example. I have been doing this mantra meditation since last 18 years. And I can see a difference in myself. When there is a adverse situation, with the grace of the Lord, I know that when to react, when to act. तो इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके हाथ में एक पेप्सी का कैन है, ठीक है? अभी आप उस कैन को मारो, ऐसे 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 करके हिला दो, एकदम शेक कर दो, ठीक है ना? जैसे हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में लोग कर देते हैं, एकदम शेक कर देते हैं अंदर तक, isn't it? तो मान लीजिए कोई हमें बहुत जबरदस्त, हमें नहीं, एक पेप्सी के कैन को शेक कर रहा है. अब आप तुरंत उसको खोलिए तो क्या होगा? क्या होगा? सारी पेप्सी बाहर आ जाएगी, है ना? उसमें फिज क्रिएट होगा, सब बाहर आ जाएगा. पर अगर आपके हाथ में जैसे पानी की बोतल है, अगर आपके हाथ में पानी की बोतल है और आप उसको कितना मर्जी शेक करिए, कितना मर्जी शेक करिए, आप उसको खोलेंगे तो बाहर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, isn't it? तो कभी कभी हमें क्या करते हैं, हम एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, एडवर्स सिचुएशंस एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, एंड देन बाद में हमें रियलाइज होता है व्हाट वी डिड वाज रॉन्ग. यस, तो हमें पेप्सी का कैन नहीं बनना, रादर हमें पानी की बोतल बनना है. यस, दैट मिनरल वाटर व्हिच स्टेज काम इवन इफ इट इज शेकन इन एडवर्स सिचुएशन. यस, और जब हम माइंड की बात करते हैं, तो जो माइंड होता है ना, इज वेरी क्लेवर. माइंड इज वेरी क्लेवर. हाउ? अभी क्या होता है, आपने अलार्म सेट करा 5 o'clock, तो अलार्म बजा, आपके माइंड ने आपको क्या बोला? अरे अभी सो जा, अभी पूरी दुनिया सोई हुई है, तू उठ के क्या करेगा, है ना? तो आपने स्नूज का बटन दबाया और आप सो गए. फिर स्नूज का बटन दबा, फिर सो गए, फिर स्नूज का बटन दबा, 7 बज गए. अभी क्या होता है? ओ मेरी तो 7:30 तो मेरे को कैब अप लेनी है, आई हैव अ पिकअप, और फिर फटाफट फटाफट फटाफट. और फिर क्या होता है, उस पूरे फटाफट के प्रोसेस में हम अपने आप को सिर्फ कर्स कर रहे होते हैं. क्यों नहीं उठी मैं जल्दी, क्यों नहीं उठा मैं जल्दी? अगर मैं जल्दी उठ जाती तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती. आज अब मुझे 11 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा, है ना? तो अभी क्या होता है, अभी कर्स कौन करा रहा है? माइंड. पहले हमें सुलाया किसने था? माइंड.
isn't it? So what do you think? Mind is our friend or our enemy? पहले तो हमें बोल दिया सो जाओ माइंड ने, अभी हमारा माइंड कह रहा है अरे तू पागल है, सो क्यों गई? तो आप सोचिए, आपको कोई व्यक्ति कहे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम कर, आपने उस पर भरोसा करके वो काम कर लिया, अभी आपने काम कर लिया तो वही व्यक्ति आपको आगे सुना रहा है अरे तूने ये काम क्यों किया, तूने ये काम क्यों किया, तूने ये काम क्यों किया, तो आपका क्या मन करेगा? क्या मन करेगा? बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएंगे, है ना? तो यही माइंड हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है। पहले तो हमें बोल देता है करो, फिर कहता है अरे क्यों कर लिया भाई, ऐसे तो करना ही नहीं था, और फिर हम हो जाते हैं स्ट्रेस। यस, so let's come out of this cycle of blaming and then taking blame and then blaming others and then, you know, let's come out of that cycle. How do we come out of that cycle? How do we come out? जब हम अपनी intelligence में, when we'll put good things, when we'll put good, good things written in the scriptures, when we'll put all of that, then eventually good will come out. Yes, and we will understand how to tackle situations. Yes. So whatever in last 1 hour I have said, the all credit goes to the founder Acharya of SPAWN, His Divine Grace, Yati Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So he is the one, who has shown billions of souls the path of spirituality, isn't it? How to lead a balanced life, how to kick away the stress. So he, not only in India, so being an Indian man, not only in India, but he has gone far, in other countries and teaching them how to lead a balanced life. Yes. So thank you so much, everyone. And now I would like Chehak ma'am to take over. So thank you for your time and thank you for listening everything patiently. Thank you so much, Garima ma'am, for this wonderful session. And I like to thank to the participant who had take out their precious time for this session. And thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It is very good session. I feel it's very good session. And thank you so much, all the participants, for attending this session. Thank you so much. Now everyone can leave and you will get the participant certificates within 5 to 6 days. You will get your emails, and those who have attended the webinar, only those who will get the certificate, not any other. So Chehak ma'am, just one thing. Yes, ma'am. Thank you so much, first of all, for having me, and even I feel enlightened amongst everyone here. So if there is any question, maybe we have 5 minutes and we can take. Sorry, ma'am. I literally forget. Is there is any question from the participant among? Sorry from my side. No, that's okay. Yes, hello, ma'am. It was very nice presentation. So my question is that, ma'am, first you told me it is a internal response. I'm audible, ma'am, right? Yes, absolutely, you're audible. Okay. The stress is an internal response, but everybody individual have different thought process, different ideology to live in their own life, ma'am. Yes. Every day is like a new day. We tackle different kind of situation. Like I started learn new things. Okay, I don't have to do this in my place, and next day I'm learning. Oh, this is the again new thing that I'm also not aware of these things. And besides, even if I'm doing the good things, I'm not getting the same way. Like as we believe in a Krishna, so we don't we never do any bad kind of things, but still even we are trying to do good with others, sometimes we felt अच्छा इनके साथ तो नहीं करना चाहिए था. This kind of thought comes, and my problem is that every day we are tackling the same new things, so this frustration automatically will come to in our life, ma'am. So is it always be a learning process, or there will be any saddle point where we can saddle it? Okay, now I have learned each and everything, I will be calm person, stress, like I will never have a stress. Like, is it always learning process, or I can change like something? Okay, I have a question for you. So am I visible to everybody? For me, you are. Yes. Great.
So I have a question for you. Okay, let's say आप कल लाइब्रेरी जाते हैं, ओके, तो आपको लाइब्रेरी में कल क्या मिलेगा? बुक्स मिलेंगी और वहां पे बैठे हुए कुछ लोग, और परसों जाएंगे तो क्या मिलेगा? सेम थिंग। और अगर 1 महीने बाद जाएंगे तो लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? बुक्स एंड वही सेम। ओके, सेम थिंग, बुक्स मिलेंगी, यस। ठीक है ना? तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, व्हेन वी से मटेरियल, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो दिस इज अ प्लेस विच हैज बीन असाइंड टू दुर्गा माता, और इसको क्या कहते हैं? एक दुर्ग कहा जाता है, ठीक है ना? तो वाई दुर्गा माता? दुर्ग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ सब कैद हैं, ठीक है ना? तो दुर्गा माता इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। अभी इसको बोला जाता है दुखालयम अशाश्वतम। यस। ओके, दिस वर्ल्ड इज दुखालय अशाश्वतम। तो अशाश्वतम मतलब इटर्नल। नाउ दुख आल्यम मतलब, तो जैसे पुस्तकालय वैसी दुख आल्य, इजंट इट? यस। तो पुस्तकालय में हमेशा पुस्तक मिलेंगी, और दुख, और दुखालय में हमेशा दुख मिलेंगे। Yes. So this is a place where we'll always get anxiety. And like I said, this universe is a university. यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम्स होते ही रहते हैं, यस। तो एग्जाम्स हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले, लाइफ लॉन्ग एग्जाम। हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, जब हम बच्चे थे तब अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में हुए, ठीक है ना? फिर हमारे प्रोफेसर्स की एक्सपेक्टेशन, फिर हमारे बॉस की एक्सपेक्टेशन, फिर हमारे कलीग्स की एक्सपेक्टेशन, फिर हमारी शादी हो जाती है, हमारे हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन, फिर हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे की एक्सपेक्टेशन, अभी मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन, फादर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन, बच्चों की शादी हो गई तो अगर लड़का है तो बहू की एक्सपेक्टेशन, लड़की है तो दामाद की एक्सपेक्टेशन, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन की एक्सपेक्टेशन। अभी आपकी जो एज है ना, ऐसा करते करते हो जाएगी 80, ठीक है ना? सो दिस साइकिल ऑफ एक्सपेक्टेशंस विल नेवर गो अवे. That's why I'm saying we have to change our inner response mechanism. How I am reacting to the situation, that we have to change. और अगर हम वो सीख जाते हैं ना, then it will be very easy for us to, I'm so sorry. Am I visible now? Yes. Yes. Thank you. Okay. So अगर हम वो सीख जाते हैं ना कि how to change our inner response mechanism, then definitely फिर कोई भी एग्जाम आएगा ना यूनिवर्सिटी में, then like a topper, एक जो टॉपर बच्चा होता है उसको डर नहीं लगता एग्जाम से, rather उसको खुशी मिलती है that now more challenges will be thrown to me. Yes. तो अगर हम लाइफ में एक फिक्स्ड माइंडसेट लेके चलेंगे कि अरे मैं नहीं कर सकता, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं कर पाऊंगा, इस सिचुएशन से तो मैं कभी नहीं निकल सकता, दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स हो गया ना माइंड, एकदम फिक्स हो गया माइंड। एंड व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई विल ग्रो आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई विल डेफिनेटली कम आउट, आई विल डेफिनेटली टैकल एवरीथिंग। यस। तो सॉरी, मैं एकदम आई वाज लाइक absolutely honest to you that yes, the challenges in life will never end, they will always come, but yes, you can change your response. Ma'am, sometimes we know what we have to do, but our emotions overshadow our intelligence na. Sometimes emotions like so that like we know कि okay, some अगर हमारे colleagues कोई bitching कर रहा है, we know कि their nature is like that, हम उनके लिए कितना भी efforts कर ले, उनके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे, but वो वैसे उनका nature है, we understand it, but emotions are human emotions sometimes. उस चीज को जानते हो भी कि ह्यूमन इमोशन समटाइम्स नंबर ऑफ इमोशंस मैम ओवर शेडो कर देते हैं हमारे इंटेलिजेंस को। मैम ये वाला जो सिचुएशन होता है कि जहाँ पे इमोशंस ओवर शेडो करते हैं इंटेलिजेंस को, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इमोशंस आर इन आवर माइंड, है ना? तो हमारा माइंड जैसे हमें कहता है हम वैसे रिएक्ट करते हैं। मैम इंटेलिजेंस और इमोशंस दोनों एक ही जगह पे तो होते हैं, दैट इज लाइक माइंड, लाइक एज अ स्टूडेंट आई एम गुड, बट एज अ पर्सन विद डीलिंग सोशल पर्संस आई एम अ वेरी बैड, I really get very emotional, very sensitive. So that two differentiate in the same person. I can give you a solution here. I can give you a solution here. अगर किसी को स्मोक करनी होगी तो अगर किसी को स्मोक करना नहीं आता, उसको बोलो, वो पूछ रहा है मेरे को मैं कैसे स्मोक कैसे सीख सकता हूँ, तो ऐसे लोगों के साथ जाके बैठो जो स्मोक करते हैं, है ना?
हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे आगे जाके बैठो और उन बच्चों के साथ बैठो जो फर्स्ट आते हैं, तुम भी फर्स्ट आओगे। तो क्या होता है, संगत का असर है ना। तो आई थिंक यू शुड एसोसिएट विद पीपल हु आर डिवोटेड इन लाइफ एंड हु नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो वैसा ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दिस टेक्निक विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। But then, ma'am, we have to survive in this practical world. Everywhere I cannot find the devotees in our workplace, or number of places are there which is not filled by devotee or good person. But we have to survive in this practical world. To survive the practical, we know the cleverness and like number of things the people are That's doing. what I'm saying. That's what I'm saying. They'll teach you techniques how you can stay calm in situations. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the question. So I have a small video for you. Diksha, if possible, will you be able to play? Ma'am, there is one Palagupta ma'am. They want to ask question. Okay, I'll just take that question after the video. Diksha, just click somewhere on the screen and this will go away. Diksha, can you play it again? Can you just play it again? I think बीच में रुक गई है, बफर हो रहा है. आप एक बार इसको दोबारा प्ले कर दीजिए. तो जो मक्खी 2 में कटी वो एक्चुअली एक मक्खी 2 बन गई. वो 2 से 4 हो गई हैं और वो जैसे जैसे काटता जाएगा मक्खी डबल होती जा रही है.
what did you learn from the video? कोई शेयर करना चाहेगा? क्या सीखा आपने वीडियो से? माता जी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. Okay, anyone else? Don't blame the distractions. By changing our thought process, we can change the surrounding. Thank you, thank you. तो क्या होता है, प्रॉब्लम एक होती है, हम उसको by overdoing solutions, you know, तो क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम को जो जितनी वो छोटी होती है हम उसको और उतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना. तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, उसके पास एक गाय होती है, ठीक है. तो कहते हैं यार ये गाय को मैं पालूं कैसे, ठीक है. तो वो क्या करता है, उसको पालने के लिए वो शादी कर लेता है. शादी करने के बाद वो कहता है चलो बच्चे कर लेता हूँ. बच्चे करने के बाद अभी वो क्या करता है, इतना अपना जो कुटुंब होता है वो इतना बड़ा वास्ट कर लेता है कि उसको लगता है छोटी सी प्रॉब्लम थी कि गाय की सेवा करनी थी, अभी क्या हो रहा है, मुझे सबकी सेवा करनी पड़ती है. Isn't it? So sometimes we make small problems into big, but वो problem होती नहीं है ना. We just have to change our inner response mechanism, and by following that CEO if principle. Yes. Okay. Thank you. If there are no questions, No, माता जी. Palak Gupta had a question. Sakshi, you have a question? Please go ahead. हरे कृष्णा माता जी. माता जी जैसे आपने बताया ना कि हमें मतलब सिचुएशन या सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ओवर रिएक्ट हो जाता है. लेकिन सामने वाला हमें कुछ बोलता, हमें पता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा हमारे लिए हानिकारक होता है. बट हम तब उस सिचुएशन पे तो हम उसके साथ कुछ रिएक्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं. बट सारा दिन माइंड में वही घूमता रहता है, मैंने उसको कुछ बोला क्यों नहीं. तो माता जी कभी ना कभी वो दोबारा तब रिएक्ट करता है, तब मेरे जैसे थोड़ा करते हैं रिएक्ट, तो वो पिछली बात भी याद आके ओवर रिएक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा वाला जो नहीं होना चाहिए. तो मैं सोचती हूँ कि पहले रिएक्ट कर देती तो ज्यादा अच्छा रहता. अब वो ज्यादा बड़ी चीज हो गई है, लोग मेरे से ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, और इसकी वजह से फिर सब कृष्णा को ब्लेम करते हैं कि आई बड़े डिवोटी बनते हैं, गुस्सा तो इतना करती है. तो sometimes क्या होता है कि कभी-कभी जब गुस्सा होता है ना हमें, तब हम कुछ भी बोल देते हैं, isn't it? But when we are out of that situation, जब हमारा माइंड थोड़ा काम होता है, तब हमें पता होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट. तो अगर आप ऐसा करते हो और अपने आप को सिचुएशंस में रोक लेते हो, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो इट्स अ गुड थिंग अगर आप एकदम से जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड आई थिंक यू शुड कीप दैट थिंग विद यू. तो कभी कभी क्या होता है, मोमेंटरी ना हमें लगता है कि अरे तो मैंने ऐसा करा ही क्यों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट देन जब हम ऐसा करते हैं, देन वी फील दैट हमें लगता है कि यस वी हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल. And I would suggest you in that situation, probably you can talk to somebody who's senior to you, who can guide you in such situations. And then, that habit of overreacting will go away. Okay, Thank you. Thank you. Okay, we have one more question. Not able to concentrate on studies and then not able to focus on chanting. Just read again. Okay, not able to chant as well. For that, we need to maintain a daily schedule. अगर हम एक daily schedule अपना maintain करेंगे, and if we try and follow it, then definitely if we set a time for ourselves, कि हम इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, तो जो हमारा जो 24 hours का span होता है ना, वो automatically थोड़ा बड़ा हो जाता है, and उससे क्या होता है, we are able to do everything. इसीलिए सेल्फ ट्रैकर्स जो हैं फॉलो करे जाते हैं, इवन इन कॉर्पोरेट, एवरीवेयर, इवन डिवोटीज, दे कीप अ ट्रैकर फॉर देमसेल्फ. व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट दे हैव टू डू. यस, एंड दिस इज दैट हाउ टू डू एवरीथिंग इन प्लेस, एंड हाउ टू डू इट विद कॉन्सेंट्रेशन. द मोर वी चैंट, द मोर माइंड स्टेज काम, और वो इधर उधर नहीं भागेगा. यस, एंड द मोर वी प्रैक्टिस इट, वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट. एंड देयर इज अ स्टडी
there were group of students, उनको कुछ को एग्जाम के टाइम पे chanting कराया गया और कुछ को नहीं कराया गया. So the result of the students who were chanting was much more good than the students who were not chanting. So this comes with a little gradual practice. Is there any other doubt here? Thank you. Great. Okay. So in future, if you face any problem, then you can contact. So you have a very wonderful person to approach, which is Chehak ma'am. She's a very sweet and a wonderful person. And also we have SCON centers everywhere in every city. We have in every country. We have our centers where we really help people to have a growth mindset instead of a fixed mind. So you're most welcome. Anytime you can approach and make your life successful. Thank you so much. Hare Krishna. Let's chant the mantra one time, okay, together. And probably, if you feel good, then keep on chanting. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is the mantra which we have to chant. Yes. Thank you so much. Hare Krishna.